like to say my words of thanks and gratitude to all the organizers of this program, especially the Paradigm Society, their president, and all the members. And it's always very nice to be part of any event in any university because after graduation and graduating from the universities, we seldom find a chance or opportunity to again be part of any event in any university. So when I graduated from Punjab University way back in 2003-2004, after that, straight away, I joined police as ASP. So afterwards, whenever I found an opportunity to be part of any event in any educational institution, whether that is any college or any institution or any university, that was always a very nice pleasure and a good learning experience for me as well, because with the passage of time, you definitely learn from the young experience of young people, and it's always just like two-way interaction by sharing your experience and learning from the experience of younger lot. As today I have been given the topic to talk about human rights, especially in the context of policing all over world, especially in our part of the region, that is AJK and Pakistan. But before I start, I would like to enlighten you guys about the kind of development we have in AJK police, especially in Mirpur police. Because normally, whenever we learn something about police or hear something about police, that's most of the time about the negativity. So, bringing hope and spreading hope should always be the motto of all the institutions, whether that's in AJK or anywhere in Pakistan. I would like to touch upon the digitization and digitalization in Mirpur police, especially Mirpur police and AJK police as a whole. Almost 3 years ago, we started this journey of digitalization, and we took assistance from Punjab Information Technology Board, and then from Sindh Information Technology Board, and then from Federal Government, Federal Ministry of Information Technology and Broadcasting, and then from KPK Police. We have lots of softwares, we have lots of applications, but unfortunately, maybe I feel that maybe there is something lacking in our part, that we have not been able to spread our message across the communities and to tell them what we are doing in our institution, our department. First of all, we established police khidmat barakas on the lines of Punjab Police. We have khidmat barakas, police facilitation centers all over AJK, not only in Mirpur but all over AJK. But Mirpur is unique in the sense that the first police khidmat barakas was established in Mirpur, and now the Dayal is going to be the first subdivision in AJK which is going to have a state-of-the-art khidmat barakas. The purpose was to provide all the facilities related to police under one roof. We have ladies complaint cell which is soundproof, then we have child protection bureau, then we have character certificate branch, driving licenses branch, general complaint cell, overseas desk. We all know that Mirpur is basically a city of overseas, so we have a state-of-the-art overseas facilitation center in our khidmat barakas as well. Now coming back towards the softwares, we have police station record management system, under which we have basically put all our record online from 2022-24 backward to 2008-2007. What it does, when somebody comes to get its character certificate issued, we don't need to send that application or that requirement to the concerned police station. Straight away, we can check the record of that person within 5 seconds, within 10 seconds. If I put my CNIC number on that application, within 5 seconds, I would immediately get all the criminal record of by CNIC. So it's basically connected with many other softwares, as we have CRO, Criminal Record Office. Whenever somebody gets penalty, somebody gets some kind of punishment from the courts, straight away his or her record is put on CRO. Then we have EPP, that is e-police post. We have 43 login passwords all over district Mirpur. At all our checkpoints, entry exit points, and all the police stations, you might have seen police officers checking your CNIC number through a barcode on the mobile number. That is EPP. Again, that is given to us by Punjab Information Technology, but in its operation all over Pakistan, it has got almost 3.2 million data of the criminals from all over Pakistan. If you are in any FIR, whether that is about overspeeding, whether that's some murder or anything, your name immediately would reflect in EPP.
So when you come over to get your character certificate issued, so you'll have to basically either get your name cleared, or that will be reflected on your character certificate. Then we have PKM Global, Police Khidmat Markaz Global. It's again a software by Punjab Information Technology Board, but now it has been adopted all over Pakistan. Not only in AJK, but all over Pakistan. Only that character certificate is acceptable in 70 plus embassies and consulates all over the world. And when we issue it, there is a barcode. If somebody sitting in any embassy, they want to check your veracity of that character certificate, authenticity of that character certificate, they don't need to write to us. They can simply just scan the barcode and all the information would be reflected on the screen. Then we got IVS, Integrated Verification Alert System, SWAS, Smart Verification Alert System. Then we have Hotel I, which is installed in all the hotels all over AJK, almost in 700 plus hotels. These are some of the initiatives we have taken in last 3-4 years, and Alhamdulillah, I can say with absolute surety that AJK Police and Mirpur Police is not lagging behind from any other police establishment in Pakistan. But what we are supposed to do, we need basically young leaders like you. We need youngsters like you. That's why almost 2 months ago, I requested your Honorable Vice Chancellor and then some senior officers from the university administration. They came in contact and we hired almost 25 plus internees from your university, and they assisted us a lot in the registration of data, in the digitalization of data. This is what we are doing. And again, if in near future, if we require any assistance, I would definitely request your administration to give your services to us for maybe 6 weeks or so that we can do that. Now coming back to the present situation and scenario in Mirpur. I posted here for last almost 7.5 months, and I can say with absolute surety, Alhamdulillah, the crime rate has come down to a large number, and there is a marginal difference from the crime rate of the last year and this year. This is just because of the, not only just because of the efforts of police department, but this is just because of the peaceful environment prevailing all over. Though we had a couple of important incidents, that's why I was bringing that topic towards that side. One was KFC incident, and the other one was the incident which took place on 9th of May in Dadiyal, and then the series of incidents on 11th of May. That shows the kind of extremism, fanaticism, and some other kind of issues and problems prevailing in the society. This is what we need to address. And the educational institutions, they are basically the best place to address these issues, because we need to tell our younger generations that our destination is not those of which adopted the way of violence towards police department, towards the administration, towards the general public. If you are burning the massive properties, that does not mean that you are doing any justice or any kind of special assistance to the state. You are basically creating a bad impression. KFC was burnt not only in Hayatabad, KFC was burnt in Hyderabad as well. There were issues at other places. But you must have seen it, that only KFC incident in Mirpur was highlighted all over the world. And what was the problem? The problem was that we basically gave social media space to the elements who basically propagated it negatively, and then created a very bad image, a very bad name for our city, for our department, for our state. So whenever you guys are using social media space, you need to keep one thing in mind, that now even the cyber laws, they are intact in AJK, they have been adopted by AJK government. Earlier, we had just few sections of cyber crime in our PPC adopted by AJK government, but now all the PICA sections, they have been adopted. So whenever you are using social media space, just keep one thing in mind, that sometimes people are running their own agendas, sometimes they are running their own narratives. Please be very careful and very conscious that we should be loyal to our country, we should be loyal to the state. And whenever you see any kind of campaign running against Pakistan Army or law enforcement agencies or police department or any other department, you should definitely come forward and say that these are our institutions. We need to protect them instead of just propagating those things without realizing that it's somebody else's agenda, and maybe we are just being part of that narrative. As far as the human rights situation in AJK, in Mirpur and all over Pakistan is concerned, you guys are much more enlightened from us.
But I can tell you one thing with absolute surety: with the dawn of this globalization, with the dawn of this digital era, we cannot hide anything. If there is any problem, if there is any issue or problem in any police station, or if there is any kind of misuse of authority and by any police officer, we are just a phone call away. People keep calling us, maybe till very late at night. They can approach us through different mediums. We got our Facebook page, we got our WhatsApp numbers, we got our official Twitter accounts, email addresses, so people can approach us anyways. So I honestly speaking, I believe that human rights situation in Pakistan, in Egypt especially, and in Mirpur as a whole is absolutely under control. There are few issues, exceptions are always there. I cannot deny that there are no violations of human rights, but I would simply say that situation in our part of the region is under control. And Alhamdulillah, I can say with absolute surety, whenever there is any issue or problem coming from any side by any police officer, it's addressed straight away. As far as the part of your topic about community policing is concerned, we already have established a different kind of setup in our district Mirpur. You might have seen a reception center right next to Mangla check post, and you might have seen it right in front of police station city. These are basically the reception centers, and the sole motive was to introduce something like that of KPK police, alternate dispute resolution committees. And last year only, we settled more than 2000 plus different cases, which if we didn't resolve it by involving the community, they would definitely have gone to the courts. They definitely would have gone towards the registration of FIR, and that would have definitely created lots of problem for many people. So we have different kind of committees. DCs would definitely talk on it. We got village defense committees, then we got peace committees, then we got community committees, then we got community police liaison committees. These are all basically the tools of community policing. And me and Deputy Commissioner, Alhamdulillah, for last 10 months since we are together here as Deputy Commissioner, as SSP, as part of the administration, we have always been on the forefront. Whenever there was any program or anything where we can engage the community, or we can go towards the community and just get to know about the issues and problems and getting information from their feedback, we have always been on the forefront, involving the communities in different kind of situations and scenarios. So if you guys got any question or anything, this is something, because I was basically informed in the morning that I have to be part of some seminar in university, so I just couldn't prepare anything. This is what was there in my mind. If you got any questions, any queries, anything to ask about police department, about administration, about anything in general, you are more than welcome. हम लोग तो यूनिवर्सिटीज में बहुत सवाल पूछते थे. बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आपकी बात. माइक अगर हो तो माइक दे दे. अलाउ तो नहीं है. इसको रोकने के लिए आप ये नहीं करना. मैंने जब भी देखा है छोटी छोटी गली मोहल्लों की दुकानें हैं, उन्हें छोटे छोटे बच्चे हैं 14 से 15 साल की उम्र है, उन्हें सिगरेट दिए जाते हैं. क्यों दिए जाते हैं? और ये इसको रोकेगा कौन? आप हमारे मुहाफिज हैं. आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप रोकें. मेरी गुजारिश ये है कि जो ये दुकानें हैं छोटी छोटी, उन पर स्ट्रिक्ट लॉज लगाए जाएं ताकि वो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें सिगरेट वगैरह ना दिए जाए. यही बात में यही वही है जो छोटे छोटे बच्चे हैं बाद में ड्रग्स डीलर बन रहे हैं. और मिरपुर में ड्रग्स डीलर आपको पता है कितने मिकदार है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इनको रोका जाए. बिल्कुल सर.
थैंक यू बेटा। यही सवाल आपका? एक तो जो आपने बात की ना 18 साल से कम उम्र, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट वगैरह बेचना या कुछ भी बेचना वो उस तरह से अलाउ नहीं है। तो आपकी बात ठीक है। देखिए, मसाइल हर जगह पे होते हैं। अगर मैं खाली इस पे आ जाऊं मंशियात पे, अब अगर मैं ये कहूं कि मीरपुर में मंशियात नहीं है तो ये एक सफेद झूठ है। मीरपुर में भी मंशियात है, एजे के पूरे में ये इश्यूज हैं, पूरे पाकिस्तान में। वक्त के साथ साथ जैसे मसाइल बढ़े, अगर मैं ये कहूं कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी मंशियात बिकती है तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमारी उसका सक्सेस नहीं होती। 18 साल से कम उम्र का बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर से भी आगे सिगरेट देना चाहिए, उसको भी मिल जाएगा। ये मसाइल हर जगह पे है। जो इस साल का हमारा क्राइम का डेटा है, हालांकि हमारे 2 माह तकरीबन केएफसी और उसके इमीडिएट की बाद जो एक हमारे सब इंस्पेक्टर की शहादत हुई अदनान की अपने फर्ज की अदायगी के दौरान 11 मई को, 29 मार्च को केएफसी हुआ, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ। तकरीबन 2 से 2.5 माह हम उस तरह से पॉलिसी नहीं कर सके जिस हमें करनी चाहिए थी। इसके बावजूद अगर मैं आपको यहाँ पे डेटा स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करके दिखा सकूं, मैं यकीन से कह सकता हूं जितने बड़े डीलर्स हैं, अगर उनमें से एक भी खुल के मंशियात बेच रहा हो तो मैं यहां से जाने को तैयार हूं। हमने हर एक को टाइट किया। हमने इस साल, खाली इस साल हम तकरीबन 170 के करीब पिछले 6-7 माह में मंशियात के मुकदमा दर्ज किए। बहुत बड़ी मिकदार में भी हमने रिकवरीज की। मसाइल हैं, डेफिनेटली हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, अब मंगला से शुरू करते हैं तो दानगली तक तकरीबन ये 110-115 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इसी तरह आप शहर से जातला की तरफ जाते हैं, जातला खोखरा इस एरिया तक ये सारी मीरपुर की इसमें हदूद आ जाती है, इसी तरह ब्लॉक ब्रिज के साथ। ये बहुत बड़ा एरिया है, आबादी भी तकरीबन 6 लाख के करीब है। फिर जो मोबाइल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। जो लोग पंजाब से आके यहाँ काम करते हैं, जो हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं, पूरा साल वो विजिट करते हैं। और टोटल जो पुलिस फोर्स हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट में, दैट्स अराउंड 650, इंक्लूडिंग मी, including my official staff sitting in my office, the administration side and all the 8 police stations. आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि 600 जवानों के साथ इतने बड़े एरिया को कवर करना। और फिर मैं उस पर कभी भी ये दावा नहीं करूंगा कि दूध और शहद की नहरें हमने बहा दी। हम एफर्ट कर सकते हैं बेटा, उसमें छोटे छोटे मसाइल हमेशा रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कानून पहले से मौजूद है, कानून की जरूरत नहीं है। कानून पहले से इस पर सख्त है, कानून मौजूद है, इसको हम दोबारा भी देख लेते हैं। जो बाकी स्टेक होल्डर है जिनके साथ जिम्मेदारी उनको भी साथ रख के तो हम इसको देख लेते हैं। बेटा आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल हो, एक पॉइंट मुझे उसमें रह गया जो आप लोगों के कंसर्निंग भी होगा थोड़ा सा, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली द क्राइम अगेंस्ट वीमेन, but I have seen the data of the last 5-7 years that's unfortunately on the rise, especially the cyber crime, cyber bullying, stalking, just teasing someone on social media, just blackmailing, the kind of other thing. Because I've served in FIA for long and I've been head of cyber crime in Rawalpindi, Islamabad, so I've seen many such cases and I can see on daily basis, I can see many cases in district Mirpur as well. For that, what we are going to do, we are going to establish, I have already written a letter with the comprehensive plan to the government, and inshallah in next few months we are going to start the establishment of a new women police station in Mirpur. Earlier we have only one women police station in Ravla Court, and inshallah the second one in Ejeke would be in Mirpur.
टाइम जो थॉट प्रोसेस होता है या डिसीजन मेकिंग होती है, आप उसको किस तरह से करते हैं या आप फिर क्या सोच रहे हैं? क्योंकि बैठ बैठे हुए लोग होते हैं, वो ज्यादातर लोग होते हैं जो वो कह रहे हैं इसकी मेंटालिटी अलग होती है, आप उसको भी हैंडल करना है, आप कम्युनिटी को जवाब देना है, बिल्कुल ठीक है। सिचुएशन होती है उसको आप खुद कैसे हैंडल? Thank you very much for a very good and pertinent question. देखिए, the kind of job we have, me and DC साहब, we have to make quick decisions. We got very short time to make a decision, whether we should adopt this way or we should adopt that way. We got very short time to make a decision. As far as if you ask me particularly about that particular incident of KFC, you all know there was a religious sentiment behind it. Whenever people plan any kind of such rallies, we are always very careful and very cautious that we shouldn't be part of any such scheme or plans where we just go a few steps ahead to stop them. It was basically the kind of activity going on all over Pakistan. Before KFC incident, those people, they already had held a rally on the previous Friday, and they just went to the Mega Mart Chowk and came back. That particular night, again they had the same plan, but if we stop them before Mega Mart anywhere in between, definitely अब मुझ पे और डीसी साहब पे यहूदी एजेंट होने का फतवा तो लग चुका होता कि इन्होंने इसराइल के खिलाफ रैली को रोका है। इसलिए हमने उनको एक लेवल तक की जो परमिशन थी वो परमिशन इनको दी गई कि आप मेगा मार्ट चौक तक आए, आप अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रिकॉर्ड करवाएं। वहां तक वो लोग आए, nobody stopped them. Police vehicles and the magistrates, they were accompanying them. वहां तक वो लोग गए, वहां से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम थोड़ा सा आगे जाके केएफसी के सामने जाके हम एहतजाज करने से कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों की तादाद ज्यादा थी। अगेन मैंने आपको पहले बात की कि देयर वाज अ रिलीजियस सेंटिमेंट बिहाइंड इट। हम नहीं चाह रहे थे कि हम उसको ज्यादा सख्ती करें। वहां पे जब लोग आए, डेफिनेटली जब मॉब आता है, आप लोग हमसे बेहतर समझते हैं, देयर इज अ मॉब साइकी। मॉब साइकी ये है कि अगर इस रूम में से ये जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा कंटिन्यूसली छत की तरफ स्टेयर करना शुरू करेगा तो ऐसा ऐसा सारे देखना शुरू कर देंगे। दो तीन चार लोगों ने who had some other designs, they started pelting stones on that building, on that property, और उनको देखा देखी फिर बाकी लोगों ने शुरू किया। जो चीजें आपने सोशल मीडिया पे देखी, स्पेशली पहले 24 से 48 घंटों में, इट वाज ऑल नेगेटिव और इट वाज ऑल exaggerated kind of a version. लेकिन nobody realized the efforts and the bravery and valorry of our brave soldiers, our troops, our magistrates, जिन्होंने 4 से 5 दफा जिन लोगों ने एफर्ट्स की, उन्होंने उस ना सिर्फ प्रॉपर्टी को सेव किया, 5 दफा लोगों ने, आप सारे लोग जानते हैं केएफसी, आप लोग जाते होंगे, आपने देखा होगा, दिस इज बेसिकली राइट इन द मिडल ऑफ अर्बन सेंटर, राइट इन द मिडल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी ऑल अराउंड। तो वहां पे पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा सख्ती करना, आसपास बाकी बिल्डिंग्स है उनको भी नुकसान पहुंचता, लेकिन हमने ना सिर्फ उन 5-6 दफा जो लोगों ने अटैक किया उसको रोका, बल्कि हमने पहली रात में तकरीबन कोई 50 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया, फिर हमने मजीद लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन उसमें हमने टिपिकल जो पुलिस वर्किंग होती है हमने वो नहीं की। हमने पहली रात के बाद जो लोग पकड़े, हमने वो लोग पकड़े जो हमने इंफॉर्मेशन की बेस पे पकड़े, सीसीटीवी कैमरास की बेसिस पे पकड़े, सोशल मीडिया की जो वीडियोस थी उनकी बेसिस पे पकड़े। फिर ह्यूमन राइट्स की जहां तक बात आती है, उसमें जब हमें लगा इसमें से कुछ लोग बेगुनाह हैं एंड दे आर इनोसेंट, दे वर ओनली जस्ट कैरिंग द प्रोटेस्ट एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे डिडंट पेट एनी स्टोन, या वो जो आसपास से हमने पकड़े, हमने कोर्ट को इन्वॉल्व किए बगैर खुद ही उनमें से 32 लोगों को हमने रिहा कर दिया। जितने लोगों को हमने चालान किया तकरीबन 55 के करीब, ये सारे वो थे जो जेन्युइनली उसके अंदर इन्वॉल्व थे। कोई बंदा ये नहीं कह सकता हमने किसी गलत बंदे को पकड़ा या किसी गलत बंदे को चालान किया। जो आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, देखिए ये बड़ा, यू लर्न बेसिकली ऑल दिस थिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस कम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन यू गो थ्रू सच सिचुएशंस यू डेफिनेटली लर्न आफ्टरवर्ड्स। तो हम इस तरह के सिचुएशंस में, चाहे केएफसी है या 9 मई है या 11 मई है या बाकी सिचुएशंस है, हमने उसमें सैनिटी को भी प्रिवेल करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी प्रिवेल करना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने इंटैक्ट रखना होता है, रूल ऑफ लॉ को भी हमने करना होता है, और रिट ऑफ द स्टेट को भी हमने कायम रखना होता है। जी बेटा, बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मुझे सिर्फ केएफसी सुनाई दी है।
क्वेश्चन है कि हमने ये सुना दैट पर्सन के कुछ लोगों से दे केप्ट अंडर कस्टडी फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे वर टॉर्चर्ड एट नाइट। लाइक आप लोग मीटिंग वगैरह में ये चीज हमने सुनी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी चीज ये कि आपने कैप्टन सर्टिफिकेट की बात की, दे वर यूथ ना, तो उनके कैप्टन में इंडियन होगी कि दे वर अरेस्टेड, दे वर अंडर कस्टडी, तो ये आप इसकी फ्यूचर इम्प्लीकेशन इस चीज को कैसे आप अपने बिहाफ में कहते हैं कि इमोरलिटी किस तरह होंगी है ह्यूमन राइट्स के अंदर उसकी जुरिडिक्शन है। देखिए, जो लोग हमने गिरफ्तार किए, मैंने आपको कहा कि पहली रात को हमने तकरीबन 50 के करीब लोग रात को ही गिरफ्तार कर लिए थे। जहां तक टॉर्चर की या उन चीजों की बात है, उसको डिनाई नहीं करते, बाज़ औक़ात आप करते हैं, आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपने रिट ऑफ द स्टेट को भी कायम करना है, रूल ऑफ लॉ को भी आपने स्टैब्लिश करना है। दूसरी जो आपने बात की कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, मैंने आपको पहले बताया दिस इज बेसिकली पीकेएम ग्लोबल एंड दैट इज अ सॉफ्टवेयर अडॉप्टेड बाय ऑल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मीरपुर से मिलता है, यही सेम कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कराची से मिलता है, यही गोटकी में जारी हो रहा है, यही जाफराबाद में हो रहा है, यही कोहिस्तान में हो रहा है, ये सेम है। वो एक जैसा टेम्पलेट है, एक जैसा उसका सिस्टम है, और वो इस तरह से है कि मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि ऑल दी सॉफ्टवेयर दे आर इंटरकनेक्टेड। जो पीएसएफ आरएमएस में जो डेटा आ जाएगा, जिन लोगों के एफआईआर में नाम आएंगे, जैसे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे, वो फौरी तौर पे उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन फिर उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आखिर में जाके अगर कोई बंदा बेगुनाह हो गया किसी मुकदमे में, या उसका रोल उस तरह से नहीं था, हम उसके आखिर में एक्विटेड लिख देते हैं, एक्विटेड। अगर किसी को सजा हुई है तो आखिर में ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं कि इसको सजा हुई है। इसका मकसद भी है, देखें, किसी के डॉक्यूमेंट्स खराब करना या किसी को खराब करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है और लोगों के अंदर एक जो कानून का और कानून की अमलदारी का जो खौफ है, उसको कायम रखना। अभी आप लोग भी यंगस्टर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपका फ्यूचर है आगे, try your level but not to be involved in any kind of criminal activity, not at all, because now the time has passed when people, even after being involved in murders and any other such heinous cases, they used to get their character certificates. अभी अगर किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई चीज होगी, उसको मैं या मेरे डीआई साहब, डीसी साहब या आईजी साहब, कोई बंदा भी उसको बेवाफ नहीं कर सकता। वो उसी तरह रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि उसने डेटा उठाने है आपके पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से, उसमें वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, हम उसको वहां से रिमूव नहीं कर सकते। वाह, My question is about harassment. पाकिस्तान में harassment जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मीरपुर कश्मीर की जहाँ बात की जाए वहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं। लेकिन बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जो स्पेशली गर्ल्स है वो सिक्योरिटी फील नहीं करती। रोड पे जाते हुए आपको कोई भी आगे थ्रेट कर देता है, उनके पास वेपन्स होते हैं और वो आई डोंट नो उनके पास लाइसेंस होते या नहीं होते, और वो आपको हरास करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भाई आप बैठो आके, और अपनी अगर इनकार करते हो आपको गन शो करते हैं। तो सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि हमारे जो सीसीटीवी कैमरास है वो वर्क क्यों नहीं करते? मतलब जब भी कुछ ऐसा सिनेरियो होता है तो सीसीटीवी कैमरा वर्क नहीं कर रहे, व्हाई? थैंक यू वेरी मच। देखिए बेटा, जो आपने बात की ना हरासमेंट की, मैं आपकी बात से पूरी तरह अग्री नहीं करता कि यहाँ पे हरासमेंट नहीं है। हरासमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स है। अगर आप हरासमेंट का जो कानून है, उसकी जो डेफिनेशंस है, वो अगर आप सारी पढ़ेंगे तो हरासमेंट की बहुत सारी फॉर्म्स है, बहुत सारी सिचुएशंस है। यही एक मिसनंबर है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके बारे में मैं पिछले बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ, केम बैक फ्रॉम एफआईए, कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो कि कानून से उस तरह से वाकफकारी नहीं है। अगर आपको पूरी वाकफकारी हो और लोग फिर उस पर अमल भी करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। यहाँ पे जो इश्यू और प्रॉब्लम है वो क्या है, जो पहले था, अभी शायद वो सॉल्व हो जाएगा, वो था कि हमने जो पीका के लॉज है पूरी तरह से उस तरह से अडॉप्ट नहीं हुए थे, ना इन प्रैक्टिस आए थे। अभी वो सारे अडॉप्ट हो गए, इन प्रैक्टिस है। जो चीजें हमारे पास आती है, हमने स्पेशल उसमें एक कमेटी अपने ऑफिस में भी बनाई हुई है, एंड इफ देयर इज एनी केस रिपोर्टेड एट एनी पुलिस स्टेशन, that has always been taken and will always be taken as the top priority। जो आपने बात की है कि सड़क पे लोग वेपन लेके, चाहे वो आपका
वेपन, उसका लाइसेंस बना हुआ है या नहीं बना हुआ, nobody has the right to harass anybody or to threaten anybody. If there is any something reported, मैं आपको यकीन से ये बात कह सकता हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है उस पर हम एक्शन ना करें। हाँ, अगर किसी पुलिस स्टेशन के लेवल पे, किसी छोटे लेवल पे कुछ चीजें अगर मैनेज हो गई हो, हम तक नहीं आई, तो उसके बारे में मैं कोई ये बात नहीं कह सकता कि थानों के अंदर सारी चीजें स्मूथ होती हैं, कि जब मसाइल होते हैं सदा वो ना देखो। तीसरा जो आपका सवाल था रिगार्डिंग सीसीटीवी कैमरास, ये बात भी शायद आप लोगों के लिए थोड़ी सी हैरत वाली भी होगी, थोड़ी डिफरेंट भी होगी। मैं पहले यहाँ पे तकरीबन 8 माह SSP रहा, 2021 के एंड में मैं आया था और 22 के मिड में कहीं चेंज हो गया था, अभी दोबारा मुझे इतना टाइम हो गया। हमने अपनी मदद आपके तहत जो पुलिस ने यहाँ मीरपुर डिस्ट्रिक्ट पूरे में जो कैमरे लगाए हैं, उनका जो नंबर है दैट इज मोर देन 290, जो पुलिस के अपने कैमरे हैं। पुलिस के अपने कैमरों में से एक कैमरा भी डिसफंक्शनल नहीं है, सिवाय उनके जो 9 मई को डडियाल में एहतजाज के दौरान जो आटा और बिजली के सस्ता करने के बारे में एहतजाज था, जो शायद कैमरों को तोड़ने से पूरा होना था, उसमें जो कैमरे टूटे, सिर्फ वही हमारे कैमरे डिसफंक्शनल है। वो भी बल्कि मैंने DC साहब इत्फाक से यहाँ बैठे हुए हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू अप्रिशिएट हिम व्हेन ही वाज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इन मीरपुर। तो इनकी कमाल मेहरबानी से हमने एक टीम इन्वॉल्व की, तो उन्होंने पूरे डडियाल में एक सेफ सिटी बनाया ऑन द लाइंस ऑफ सेफ सिटी इस्लामाबाद। उसमें हमने कोई 100 से ज्यादा कैमरे लगाए। इत्फाक से क्लासना साहब से कभी कभी मुलाकात हो ही जाती है। तो वो इसी तरह हमारे मीरपुर में भी there is not even a single check post, there is not even a single police station, there is not even single entry exit point where we don't have cameras. हमारे जो पुलिस के अपने कैमरे, then there are private cameras as you got cameras in your university and many other areas. मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि मीरपुर is absolutely a safe city as far as the cameras are concerned, लेकिन I can tell you with absolute surety कि मीरपुर AJK के अंदर सबसे ज्यादा सिक्योर्ड सिटी है as far as CCTV कवरेज इज कंसर्न। तो अगर इस तरह का कोई इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट, हम उसको स्पेशली भी देख लेते हैं। जी सर, मैं डॉक्टर रिजवान बात कर रहा हूँ। पहले तो शुक्रिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपका, और इसके लिए सर मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने शुरू में बड़े अच्छे तरीके से के साथ पुलिस डिपार्टमेंट की सारी परफॉर्मेंस बताई, हाईली अप्रिशिएट। सर मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस है वो बच्चों के लिए ना, और थोड़ी सी मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करूंगा कि 1 मंथ बैक मुझे पर्सनली एक नंबर से कुछ कॉल्स आई, तो मैं उसको ना थोड़ा कहना चाह रहा था ये उसको मतलब ये कौन बंदा है इस वाले से। तो मैं पर्सनली आपके ऑफिस गया, मैं बिजी मीटिंग, आपके डेस्क से मुझे कहा गया कि एसपी साहब की बात है, एप्लीकेशन आपके नाम की। एसपी ऑफिस में गया तो उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी, जो उन्होंने बात बताई वो मेरा कंसर्न है। उन्होंने कहा कि हमारा आपके नंबर से कोई एक्सेस नहीं है। व्हाइल ही वाज टॉकिंग अबाउट द डिजिटलाइजेशन एक्सेस, मैं बड़ा हैरान हुआ कि एसपी ऑफिस से मुझे कहा गया कि हमारी एक्सेस नहीं है कंपनीज के साथ। अच्छा, मैं उन्होंने उस पे लिख दिया कि आपका एरिया कौन सा है, तो मैंने कहा जी नाम सेक्टर है। उन्होंने कहा सिटी थाने में एसएचओ के एरिया है। खैर उन्होंने अपने पेन से उसको मार्क किया, मैं सिटी थाने चला गया, एसएचओ साहब को एप्लीकेशन दे दी। आज तक मुझे उसकी कोई फीडबैक नहीं आई। अच्छा, मैं डॉक्टर हूँ, बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, मुझे और कोई खौफ नहीं। मुझे ये लगा कि मैं एक जिम्मेदार आदमी अगर एक्सेस करता हूँ पर्सनली फिजिकली एसपी ऑफिस को, और मेरे साथ ये बिहेवियर है, यानी मैं उसकी फीडबैक नहीं दे सका, और मुझे ये नहीं बताया गया कि मुझे एक नंबर का डेटा नहीं मुझे मिल सका। हालांकि वो बहुत बड़ी कोई बात नहीं थी, कोई नेशनल लेवल का उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इतना नॉर्मल सा था, मुझे चलो पता चल जाता है कौन होता है ना। तो इस हवाले से वो मेरी एप्लीकेशन सर मेरे नाम से सिटी थाने में आज भी मौजूद है। सिर्फ ये बताएं कि उस दौरान अल्लाह न करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता जो स्टेट लेवल का होता, तो क्या उस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट की एक्सेस इन नंबर तक काफी नहीं थी, या वजह क्या है कि आप इस मौजूदा दौर में इस डिजिटलाइजेशन के एरा के अंदर भी एक्सेस नहीं है, कंपनी इतनी बालातर है, जालीदार हो गया, गोम हो गया, या कोई भी कंपनी है, क्या वो इस पे कोई नेशनल आपका लीकेज या लाइसेंस नहीं है कि वो आपको एक्सेस दे सके? थैंक यू। डॉक्टर साहब, उसमें ये है कि जो कि अब ये चीज़ें ऑन कैमरा है, मैं बहुत सारी चीज़ें इशारतन बात करूंगा। उसमें यह है कि डेटा जो है ना, वो डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस।
we definitely request all the requests towards the few concerned departments. उनकी फिर लाइजान होती है पीडीके के साथ। पिछले अरसे की जब आप बात कर रहे हैं ना, अभी वो इशू रिजॉल्व हो गया। वो इशू ये था कि देयर वाज अ पर्टिकुलर केस विच वाज अंडर ट्रायल इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अगर आपने मीडिया में उसको फॉलो किया हो, देयर वर वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट about stoppage of all kind of data to the law enforcement institutions। वो जब तक केस चलता रहा, मैं उस केस का जिक्र नहीं करूंगा, मैं आपको वहां बैठ के वो केस भी बता दूंगा। हमें भी ईमेल आई कि आपने अगले एक बार तक कोई रिक्वेस्ट यहां से नहीं भिजवा दी, क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन यू। ये हमें पीटीए की तरफ से बाकायदा ईमेल आई, वो मेरे पास अगर आप आएंगे तो मेरे टेबल पे भी वो पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। We were all handicapped just because of that particular direction by इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो डेटा हमें तकरीबन एक माह तक मुकम्मल बंद रहा। अभी वो केस का चूंकि डिसीजन आ गया, उसको उन्होंने फिर दोबारा से परमिशन दे दी। अब मैं उसकी बहुत सारी तफसील आपको यहां से नहीं बता सकूंगा कि व्हाट वाज बेसिकली द इशू, एंड इट वाज नॉट इशू रिलेटेड टू मीरपुर ओनली, इट वाज इशू बेसिकली रिलेटेड टू ऑल ओवर पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छी हैं और माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक और आपकी काफी पार्टिसिपेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम बाकी क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में। तो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी पढ़ाई की और हमारी लोगों को